Okay. See, students, already we have completed the separation procedure. It relates to transfer, promotion, demotion. Apart from this, the employee uh, now in separation procedure we have discussed what transfer, promotion, demotion. The discussion kariche, but in the separation procedure we have discussed resignation, termination, retirement, layoff. No, dismiss, all those things already we have discussed in the last class, right? So today we will discuss performance appraisal. So overall, in your unit 3 already we have completed many things, and the last chapter it is there in your unit 3, that is performance appraisal. Now we will discuss it, right? So what do you mean by performance appraisal? Performance appraisal money call. See, performance appraisal means we can evaluate na, the individual performance at the workplace. We can evaluate. Who will evaluate? Suppose in a simple manner, if we can analysis, performance appraisal means it is a systematic evaluation of the behavior and outcome of each employee by the superior at the workplace, right? Now what we will do here? Now performance appraisal, who will do this? By the superior. When? Now at the workplace. Now what we will do? Analysis. We can analysis the behavior and outcome of the individual, right? So it is basically the performance appraisal. जेमती हमें कही पार recruitment, selection, no, placement. It is there in every organization, doing by every organization. It may be a small organization, it may be a big enterprises, it may be a government, it may be a private, it may be a domestic, it may be a MNC. Likewise, performance appraisal, that is did by and doing by, no, every organization. Every organization. On the basis of your performance only, many things can be happen. Performance through right? If you are having a good performance, then what will happen? If you are having a poor performance, then what will happen? So many things it can be happen that we will discuss. How we can evaluate the we can analyze the behavior and outcome of each employees by the superior. That everything we will discuss here, right? So overall, performance appraisal means it is a step where the management find out how effective you are. And जो हमें जो तुमको hire करिथिलु ना, the organization hired the employee, and after that how effective, how efficient you are, that the organization try to analysis. Whether हमें आपको selection करी, whether हमें जो लोकटा को selection करिथिले, that is the wrong decision or that is the right decision. ताको हमें selection करी ठीक करचे ना भूल करिचे, सेटा हमें केमिति जानिबा? से लोक को हमें सिलेक्शन करी ठीक कले, हायर करी ठीक कले कि भूल कले ना, हमें जानिबा केवल परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, right? So this is what the performance appraisal. Acha. In performance appraisal, we can analyze some factor related to performance appraisal, right? What factor? See, performance appraisal related to what is to be appraised or what is to be appraisal. कौन appraise करिबा हमें गोटे लोक? What is to be appraisal or what is to be appraised means as an individual working in the organization, what we can appraise. Mo already कहली definition रे हमें कौन appraise करिबा गोटे लोकर? Now we can appraise the behavior and outcome of each employee at the workplace. Already I told you. Behavior, what it relates to? Behavior here relates to your beliefs, your ethics, no, your attitude, your personality, no, your knowledge, skills, ability, talent, everything. Now, what the things the person is holding himself and herself. That is the person's quality overall. कौन quality गोटे लोक निज भितर hold करिछि? That we can analysis on the basis of the individual behavior. And also we can analysis the individual outcome. Outcome means what? Outcome means your contribution towards the organization. Outcome means what? Now, what is the contribution of the individual towards the organization? That is the meaning of outcome, right? Contribution, how much you are, means what we can say? No, how much your means what?
the contribution towards the production, contribution towards the work. No, so outcome कौन तमे कितने दोज, how much the customers are satisfied, organization प्रति तमरो कौन contribution, right? So सेटा को हमें देखिबा. So what we can analyze is the individual at the time of performance appraisal. We can analyze the individual behavior and outcome. See, dear students, and both the factor must be excellent at the time of performance appraisal. Both the factor means your behavior must be excellent and your outcome also must be excellent, right? जेमते हमें कहले demand by supply हमें कहले सेमते हमें कहिबानी एठी कि you are holding a very good behavior but your outcome, it is my contribution towards the organization, it is very poor. No, that we cannot calculate you are a very good performer, right? Behavior बहुत भला, no, सब किछि excellent, तमरो behavior, तमरो जहा जहा मु कहले ethics, values, no, moral, everything is excellent, but your outcome, your contribution towards the organization, that is very poor. That is, you are not an excellent performer, right? On the other side, no, your outcome is excellent, no, your contribution towards the organization, it is highly satisfactory, but your behavior is very poor, no, rough behavior, you are holding some kind of behavior, no, your attitude, your behavior, your value, your moral, your ethics, everything, it may be very poor. So it is also not accepted, no, you are a very good performer. So performance means both the things must be excellent. No, you should be a very good performer. Means how? Now your behavior and outcome, both the things must be excellent. Na ए दुईटा को जदि हमर ठीक अछि, then हमें कहबा कि you are a very good performer, right? So this is what is to be appraised. हमें कौन appraise करिबा? लोकंकर behavior outcome appraise करिबा and दुईटा को excellent देखिबा हम. गोटे अधिक गोटे कम ए सब accepted हवा नाही. हैला? Second गला. Who will appraise? तमको organization रे कि appraise करिब? Who will appraise to you? ना in an organization, many person will appraise to you. जोटा कि 360 degree appraisal रे मु एठी कहि दोचे एटा हम 360 degree appraisal रे extend कर दबा. हैला से एटा मु जहा कहबी that applicable in the 360 degree performance appraisal. So एठी कोन कहूची who will appraise? कि appraise करिवो तमको organization. मु तो already कहितली ना your superior will appraise to you. तमको तम superior appraise करिवो. हैला superior means your immediate reporting authority. Who is your superior? Tomorrow organization MD is your superior? No. Tomorrow superior kiye? Na your superior is your immediate reporting authority. See tumko appraise kari. What your performance? Whether your performance is good, whether your performance is poor. So kiye appraise karibo? Tomorrow immediate. Hela? How kiye tumko appraise karibo? Na who will? Kiye tumko appraise karibo? Na your subordinate. Your subordinate kiye? ना जे कि तम अंडर रे काम करथु तम तमर ये कंट्रोल रे जे काम करथु तम अंडर रे सी हला आ गुटे पर्सन जे कि तुमको अप्राइज करिवे, राइट? सुपीरियर, सबऑर्डिनेट, peers who are the peers means it is the colleagues माने तुमको अप्राइज करिवे. तुमरो कलीग्स तम सहित जो माने काम करथिबे तम कोन हला तुम परफॉर्मेंस कोन, राइट? देन असले कि सो सुपीरियर, सबऑर्डिनेट, peers self appraisal निज को निज अप्राइज करिवे. नो तमे what you will appraise? No, the individual person you will appraise in yourself. निज को निज अप्राइज करिवे, that is a self appraisal. And how के अप्राइज करिवो ना appraised by, evaluate by the others से के आसिले customers, right? So एठी तुमको who will appraise your performance, many factor it include to analysis the individual performance. It relate to what? It relate to the self appraisal. You will appraise in yourself. The superior will appraise to you. Your subordinate will appraise to you. Your colleagues will appraise to you, and the customer will appraise to you. So basing on this, your performance evaluation can be possible. That we will discuss in the 360 degree performance appraisal. Picture dekhe. Hala. When to appraise? Kebe amaro performance appraisal hochi organization. Amar organization re performance appraisal jame कहले सेटा केबे होची. See, the performance appraisal, different organization doing performance appraisal in a different time. तमने एटी कोन कहला when माने time factor केबे करा जाय performance appraisal. Variety organization, different organization, समान different time factor fix करछन से वय से माने performance appraisal करछन.
right? जेमति कि हमें कहबे some organization doing performance appraisal quarterly, some organization doing performance appraisal half yearly, some organization doing performance appraisal yearly. कितनी मासरे करे, कि 6 मासरे करे, कि वर्षरे करे, कि डेली करे, right? Performance सकाळ आसीबो तुमको असाइन काम करा जिवो and you have to report at the end of the day, evening रे report करे, कि weekly करे. So it's depend, but overall हम जदी structure नबा performance appraisal ता हमर कोन maximum organization doing quarterly and half yearly and yearly, right? How to appraise, केमिति appraise करिबा, एई जो हमें कहिले लोकन को evaluate करिबा, right? समस्त इवैल्यूएट करिवे, सुपीरियर करिवे, सबऑर्डिनेट करिवे, ये करिवे, वो करिवे, समस्त करिवे. हाउ टू अप्राइज, केमिति करिवे अप्राइज? सी वी कैन अप्राइज, हियर वी कैन अडॉप्ट सम मेथड. किछटा हम एठी मेथड इन अडॉप्ट करिबा. बेसिंग ऑन दिस मेथड वी कैन अप्राइज द इंडिविजुअल परफॉर्मेंस. दैट इज द हाउ टू अप्राइज. मैंने डिस्कशन करिवे हाउ टू अप्राइज रे मेथड डिस्कशन करिवे, हैला मेथड एंड टेक्निक. एंड व्हाई टू अप्राइज, काहे के अप्राइज करिवे, कोन पाई हम अप्राइज करिबा. ना व्हाई टू अप्राइज वी विल go to the objectives of performance appraisal. काहे की ए जो हम एते अप्राइज करिबा, मेथड अडॉप्ट करिबा, प्रोसेस अडॉप्ट करिबा, नो काहे की करिबा, कोन रीजन कोन. सी बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस ओनली, जा सब मु रेड रे हाइलाइट करिछि, नो बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस ओनली योर सैलरी, वेजेस एंड सैलरी इट मे बी इंक्रीज. जोटा कि हम कहूचे हमरो इंक्रीमेंट हबो बेस्ड ऑन आवर परफॉर्मेंस ओनली. The salary and wages it can be increased, जोटा कि increment can be possible, right? कितने परसेंट increment करा जिवो तमो सैलरी रो, कितने परसेंट तमको दिया जिवो, कितले दिया जिवो, ये सब डिसीजन नबो बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस. परफॉर्मेंस बेसिस रे हमें कोन करिबा ना, बेस्ड ऑन योर इंडिविजुअल परफॉर्मेंस ओनली द एम्प्लॉय प्रमोशन कैन बी पॉसिबल. सो प्रमोशन डिसीजन केबे हबो प्रमोशन, राइट? को लेवल को जीवो प्रमोशन है कि whether we can give the merit based promotion, seniority based को प्रमोशन हमें करिबा, everything it can be possible based on your performance appraisal, right? Apart from this, what na any kind of termination to the employee, training, termination, right? Training हमें based on your performance only, the individual performance organization can decide how much training required towards the individual. कितने तमरो परफॉर्मेंस ता अछि और कितने ट्रेनिंग देले परफॉर्मेंस ता एक्सीलेंट हे परिबो, नो सेटा एनालिसिस करा जिवो. और एल्स हम एनालिसिस करिबा बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस द पर्सन शुड वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन और इट मस्ट बी टर्मिनेटेड. लोको को हमें बाहर कर दे ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज़ द पर्सन इज नॉट वर्थ फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, राइट? सो सेटा को मध्ये हमें डिसीजन नै परिबा, राइट? ता छोडा हमें कोन करि परिबा, ट्रांसफर ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल वी कैन ट्रांसफर द एम्प्लॉय, right? So jette sab organization ro achi na, all those factor it can be possible based on your performance. It relate to what? It relate to transfer, promotion, demotion, employee termination, employee training, employee motivation, employee everything. It can be possible based on the individual performance only. केते सैलरी दिया जिवो, केते इंक्रीमेंट करा जिवो, केते कोन दिया जिवो, ए सब किछि फैक्टर एनालिसिस हबो बेस्ड ऑन द इंडिविजुअल परफॉर्मेंस. सेटा हमें कोन कहले ना व्हाई फैक्टर, व्हाई टू अप्राइज द इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, काहे कि हम इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को अप्राइज करिबा, हैला. देन आसिला हमर कोन ना हमें कोठी डिस्कशन करिबा ना, हमर एठी गोटे फैक्टर रहिला हाउ टू अप्राइज, केमिति अप्राइज करिबा. सी अप्राइज करिबा पई हम एठी अडॉप्ट करिबा किछि मेथड आ किछि प्रोसेस, राइट? To appraise the individual performance, we can adopt some method and process of the to analysis the individual performance and evaluate the individual performance. So in the method of performance appraisal, we can analyze some traditional method of performance appraisal and some modern method of performance appraisal. दुईटा को समान and दुईटा को modern माने किछिटा new technique adopt करा जायछि, हैला. So but traditional method को highly accept करा जाउछि, right? So duita ko highly accepted by the organization and basing on this method only organization doing the performance appraisal, right? So kon na see if we will analysis some method, so it kon kochi na gote hela confidential report, na confidential report hela gote performance appraisal ro method. See again mo kochi kon ना एटी variety technique अछि, variety method अछि, ता माने नै कि हम सब आक मेथड हम ऑर्गेनाइजेशन अप्लाई कर दो, right? It's depend on the organization which method we will apply
for our organization आमे आ भितर कोटा अप्लाई करबा मेथड for the doing for purpose of the performance evaluation सेटा हम ऑर्गेनाइजेशन ऊपर प्योरली डिपेंड करछि राइट आमे ता भितर बहुत सारा डिस्कशन कर दोछि तुम ऊपर डिपेंड करछि तुम कोडा अडॉप्ट करबो एंड एक्सेप्ट कर राइट चलो तो सेडु कोन अछि गोटेला कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट कोन ना कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट एटा कहां रे जो ट्रेडिशनल मेथड राइट and this method highly adopted by the government organization confidential method ता एटा तो confidential माने कोन गोटे जिंस को हमें कॉन्फिडेंस रखिबा राइट इट माइट नॉट बी डिस्क्लोज गोटे जो सपोज हमें कॉन्फिडेंस माने कोन गोटे तमु कथा कहूची तमे कहा को कहबन ता माने कोन यू शुड नॉट डिस्क्लोज द इंफॉर्मेशन राइट हमें जहां इंफॉर्मेशन कलेक्ट करे दैट मस्ट बी मेंटेन कॉन्फिडेंशियल इट मस्ट नॉट बी डिस्क्लोज सो एटा किए प्राइवेट कोन डिस्क्लोज न करी इंफॉर्मेशन रखिबो तमरो परफॉर्मेंस कोन what is your performance whether your performance is good whether your performance is poor private organization first डाकिबो एम्प्लॉयर पाखरे बसेबो बापा देखे तो सिचुएशन होचे या हां कंटीन्यूअसली एति मास हैला तोर परफॉर्मेंस होची बहुत पोर सो जदी भलो परफॉर्मेंस न करिवो कमिंग मंथ रे मते तो विषय चिंता करियो हैला भाबियो पड़िबो तो पाई बोली whether you will continue or not सेटा तो से सीधा मोहरे कहबो डाकी पाखरे बसेगिरी पुनी भलो भाबरे भद्र भाबरे हैला किंतु गवर्नमेंट कोन करिवो ना गवर्नमेंट बेसिकली कोन ना दिस मेथड it is basically adopted by the government organization because why see the confidential report prepared by ke prepared kariba by the immediate superior obviously confidential report will prepared by the immediate superior kahara na of the subordinate working in the working at that particular area right kon analysis karibo tar confidential report ram je report tar collect kariba gote employee ro kon collect kariba gote lokor kon collect kariba we will collect some strength of the employee weakness of the employee तार भलो जिंस भी देखिबा खराब जिंस खाली तार खराब जिंस को आइडेंटिफाई करबा राइट से केते कोन भूल करिछि ऑर्गेनाइजेशन रे ताकू धर ना 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 केते कोन भूल करछि ताकू धरि के ताकू माने गोटे पनिशमेंट देबा ताकू बाहर करबा से सब नो नो जत्ते बेले भी परफॉर्मेंस अप्रेजल हबो ना जत्ते स्टेप निया जिवो एठी मन रखिबो एवरी ऑर्गेनाइजेशन विल एनालिसिस बोथ द साइड ऑफ द एम्प्लॉय राइट जेमते हमें कॉइन रो दीटा साइड देखुचे सेठी बोथ द साइड हमें देखिबा ना we will analysis the strength of the employee we will analysis the weakness of the employee right so एठी हमें कौन देखिबा ना strength of the employee weakness of the employee achievement of the employee failure of the employee ना personality of the employee behavior of the employee सब को हमें कलेक्ट करबा इंफॉर्मेशन who will collect superior the immediate superior will collect immediate superior collect करिवो काहार करिवो सबऑर्डिनेट रो कलेक्ट करिवो राइट ए जो हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करिवा ना एटा को हमें कोन करिवा ना that information whatever may be your performance may be good your performance may be poor that the immediate superior will collect everything related to subordinate but that information the superior will not disclose in front of the subordinate सेटा को हमें subordinate front रे disclose करिवा नहीं right and basing on the performance only the organization can take the step whether your promotion your demotion your transfer whatever may be the step will take by the organization but it must not be disclosed right and here the basically 80 madhya na kon kara jibo na employee madhya jani pariboni na kahin ki what is my weakness what is my strength what is how I can overcome this eta madhya se jani paribo nahi kahin ki superior disclose kariboni kahin ki subordinate jani pariboni see in some organization some factor na kichi time re ना हमें किछि जिंस को कॉन्फिडेंशियल रखिबा ही भलो काहे कि if we will disclose that information if we will means what confront that information then what will happen so it may leads to conflict no it may to avoid conflict to avoid such kind of atmosphere no so that's why we try to avoid such kind of situation we will not disclose anything राइट धर आमे किछि गोटे कहले से सेटा को कोन करबो इश्यू करी कि जाय कि ट्रेड यूनियन पाखर पहुंचबो ट्रेड यूनियन कोन करबो ताको और इश्यू करी कि कोन करबो ना ता ऊपर एक्शन हबो ताको कोन करबो ना से स्ट्राइक करिया को जीवो सो ए सबो वैरायटी काइंड सिचुएशन रो ओवरकम करबा पई आमे कोन करबा ना वी विल टेक अ डिसिप्लिनरी एक्शन एंड स्टेप but it should not be disclosed in front of the subordinate गला that is a confidential report माने रखिबो तापर असला एसए मेथड कोन सेम जिंस
essay method हमें कौन करिबा ना this is what the essay method काले गोटे फॉर्मेट देखि था हैला एटा को हमें essay method कहै राइट ako हमें कौन करिबा ना essay माने कोन essay माने हैला ना we can sort essay of the employee performance on the basis of your overall performance overall impression towards the organization जेटा ऐसे हमें कहबा गोटे छोटो सब इनफॉरमेशन तुम रिलेटेड कलेक्ट करिबा कोन इनफॉरमेशन रिलेटेड तुम कलेक्ट करिबा एवरी इनफॉरमेशन व्हाट इज योर नेम योर डेजिग्नेशन योर डेट ये वगैरह वगैरह हां केबे तुमरो प्रमोशन हेतिला केबे कोन तुमरो सैलरी इंक्रीमेंट हेतिला तमे कोन करूचो व्हाट इज योर एंटायर करियर तमर ऑर्गेनाइजेशन प्रति कंट्रीब्यूशन कोन स्ट्रेंथ कोन वीकनेस कोन अपॉर्चुनिटी कोन थ्रेट सब जिंस द सुपीरियर विल कलेक्ट टुवर्ड्स द सबऑर्डिनेट as basing on this we can take this step and basing on this basically what further step the superior will take in the organization. So this is what it is a format of the essay method and we can collect each and every information related to subordinates right then chalo eta ame jiba kono third hela tomaro kon rating method hela rating method ranking method मन रखि eta kon asila tomaro eta hela rating method kon rate kariba देखो this is the format of rating method how we can rate the employee this is a format ei format रे हमें गोटे एम्प्लॉय को रेट करिबा कोन रेट करिबा व्हाट इज योर परफॉर्मेंस सी सपोज हमें कहबा कि ना एठी ऑर्गेनाइजेशन रे एचआर डिपार्टमेंट रे 30 जन लोक काम करछ 30 एम्प्लॉयज आर वर्किंग इन द एचआर डिपार्टमेंट ना हमें समस्त का परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करिबा we can take the essay method we can go for the confidential report and we can also go for the ranking method as well as the rating method rating हमें 30 जन को करिबा केमति करिबा सेम क्वेश्चन गोटे हमें क्वेश्चन फॉर्मेट बनै दबा the question we can basically distribute to all 30 category of employee 30 टा कैटेगरी एम्प्लॉय को हमें से 30 जन को सेम क्वेश्चन हमें डिस्ट्रीब्यूट कर राइट कोन ना दैट क्वेश्चन से जो क्वेश्चन को से माने कोन करिवे ना एठी हम आसी गला से माने निजे रेट करिवे सेठी सबऑर्डिनेट रेट करिवो सेठी सुपीरियर रेट करिवो समस्त से मान को रेट करिवे केमिति रेट करिवा ना देखो हम एठी एनालिसिस करिवा योर क्वालिटी ऑफ वर्क तमरो काम क्वालिटी माने तमरो केते व्हाट इज योर वॉल्यूम ऑफ वर्क टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन केते क्वालिटी तमे मेंटेन करछ काम कला केते क्वांटिटी क्वालिटी केते मेंटेन करछ क्वांटिटी दिन को केते प्रोड्यूस करछ ठीक केते तमे टारगेट अचीव करछ ना हाउ मच टारगेट यू हैव अचीव वॉल्यूम ऑफ वर्क केते क्वालिटी केते प्योरली कामटा को तमे फिनिश करछ राइट तमरो ऑर्गेनाइजेशन रे तमरो केते से काम प्रति तमरो नॉलेज केते छ हाउ मच स्किल यू हैव टुवर्ड्स दैट वर्क तमे से धर मु आमे तुमको पठैतिलु गोटे प्रेजेंटेशन दबा पय तमे ताको भलो से देई पालो नाही ता माने कोन क्वालिटी हलानी कि क्वांटिटी हलानी कि नॉलेज हलानी कि स्किल हलानी सब आगे एठी कोन जीवो सब आगे जीवो अनसैटिस्फैक्टरी राइट तुमको आमे कोन देइतिलु ना टास्क इज यू हैव टू प्रेजेंट मींस इन फ्रंट ऑफ ए जो गोटे फोरम रे तुम गोटे भलो प्रेजेंट कर राइट एंड यू हैव टू डू बेस्ट अ प्रेजेंटर नो सेटू कोन हैला ना तुमे कोन कलो खाली हम एठी आसी बांजे तुमे केते यूनिट प्रोड्यूस कलो ना एटा सब पोथी पय एप्लीकेबल राइट तुमको टारगेट दिया हितला न केतेटा ना 10 टा मास रे 10 टा सेल करिवो तुमे केतेटा सेल करछ को वे रे करिछ राइट ए सब आग एचआर वाला तुमे केते काम तुमरो प्रोफिशिएंसी ले कंप्लीट करछ प्रोडक्शन वाला केते यूनिट प्रोड्यूस करछ सब मोस्ट को पय एप्लीकेबल राइट सो एटी हमें देखिबा नो सपोज तुमे से प्रेजेंटेशन ता यू तुमे कंप्लीटली जमा करिनो तो हमें एटी कोन देखिबा क्वालिटी वाइज क्वांटिटी वाइज नॉलेज वाइज एटीट्यूड वाइज सब वाइज यू आर दैट इज अनसैटिस्फैक्टरी राइट सो एटी देखिबा ना वेदर सब पर्टिकुलर काम जो गोटे गोटे काम रे काम वाइज ना केते तमरो क्वांटिटी वाइज केते ना सपोज हम एटी कहबा ना क्वांटिटी वाइज हम एटी केतरा फैक्टर नेले 5 फैक्टर नेले अनसैटिस्फैक्टरी फेयर ना सैटिस्फैक्टरी दैट इज हमें कहबा गुड एंड आउटस्टैंडिंग चारटा फैक्टर नै सपोज हमें कहबा कि वेदर द पर्सन इज रिलेटेड टू वर्क quantity of work it is highly outstanding केते ना जति के हमें ताको कहिथिले से ताळु अधिक काम करछि आउटस्टैंडिंग रे गला ना क्वालिटी इज आल्सो आउटस्टैंडिंग नो अगेन हमें कहबा नॉलेज रिलेटेड टू वर्क इट इज आल्सो आउटस्टैंडिंग कारण आउटस्टैंडिंग नॉलेज अछि बोले आउटस्टैंडिंग क्वांटिटी और क्वालिटी मेंटेन कल राइट सो हमें कहबा एटीट्यूड इज गुड
आमे गुड रे नेला एटीट्यूड को तार हां ए सब एमती तमरो वैरायटी टाइप रो क्वेश्चन थिबो जोतरे कि कोटा को आमे ताको रेट करिबा सो बेसिंग ऑन दिस एडी तीन प्रकार आसी परिबो हां गोटे आसला धर तमरो गोटे आसला रिलेटेड टू अनसैटिस्फैक्टरी फेयर वाइज जीवो गोटे सैटिस्फैक्टरी वाइज जीवो गोटे आउटस्टैंडिंग वाइज आई परिबो सो केते लोक कोन तुमको रेट करले व्हाट इज योर परफॉर्मेंस बेसिंग ऑन दिस द ऑर्गेनाइजेशन कैन टेक द फॉरकास्ट राइट ए आंसर हमें एनालिसिस करबा कोन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस रैंकिंग मेथड कौन करबा ना रैंकिंग मेथड देखो हैविंग ऑर्गेनाइजेशन के जन अछन मो कहले एचआर डिपार्टमेंट 30 लोक अछन हम 30 लोक को रैंक करबा हाउ वी कैन रैंक द एम्प्लॉय सी वी कैन रैंक द एम्प्लॉय टू केमिति ना people are working in a same area same work they are doing same work ए सब आगे same work रे जीव हैला सेति पे हम सिमिलर क्वेश्चन बनेले समस्तन को पई हैला so same work doing in a same work same area and basing on this we can rank the employee from the means what best to poor right बुझी गला on the basis of overall performance रा हम गोटे क्वेश्चनर बनेबा सेटा हम एनालिसिस करबा कोन ना बेस्ट टू पोरेस्ट पोर टू बेस्ट के हला सबुड बेस्ट आउ के सबुड पोर सेटु हम एमती रैंक करबा गोटे लोक फॉर एग्जांपल धरो केमिति करबा देखो दिस इज अ स्लाइड एटी हम नेले एम्प्लॉय ए एम्प्लॉय बी एंड एम्प्लॉय सी हला तीन जन लोकन को एटी हम नेले एम्प्लॉय ए बी सी सी एटी हम कहबा एम्प्लॉय ए केतटा प्लस से होल्ड करची एम्प्लॉय ए होल्डिंग 4 प्लस ता माने कोन सी चारिटा माने हमें जो आउट ऑफ मेनी क्वेश्चन हमें धर एटी चारटा क्वेश्चन को इवैल्यूएट करछे चारिटा क्वेश्चन रो सी हमें केतरा क्वेश्चन इवैल्यूएट करछे छटा क्वेश्चन रो कोन ना से एम्प्लॉय चारिटा रे प्लस आसी माने कोन ना सी आउट ऑफ 6 सी माने कोन छटा रे तार बेस्ट अछि चारिटा रे सी बेस्ट अछि हैला आउट ऑफ 6 4 रे बेस्ट करछि सेमति जदी हम एम्प्लॉय बी को जिबा सी कोन करछि ना आउट ऑफ 6 तार केतरा रे बेस्ट अछि ना आउट ऑफ 6 ये कला कोन सपोज दीटा रे बेस्ट कला एम्प्लॉय सी कोन कला ना आउट ऑफ 6 से केतरा रे बेस्ट कला तीनटा रे बेस्ट कला राइट सो एठी हम एनालिसिस करबा तीन जन भीतर जदी हमें कंपेयर करूचे रैंक रे जदी हमें रखिबा ना एम्प्लॉय ए विल बी देयर इन ए फर्स्ट रैंक एम्प्लॉय सी विल बी देयर इन ए सेकंड पोजीशन एंड एम्प्लॉय बी will be there in a third position right say wise people are working in a same department doing same work similar kind of work no we can rank the employee based on the highest to poorest right so it hame kon kale ame iti 6 टा 10 टा 50 टा 100 टा 500 जेतेटा क्वेश्चन तमे नबो राइट से अनुसार केतेटा रे जनकर प्लस रहिला ता माने से सब आगे पॉजिटिव करछि केतेटा रे जनकर माइनस रहिला ता माने दैट इज नेगेटिव टुवर्ड्स द वर्क सो आमे जेमते एटी रैंक करले ए बी सी डी ई एफ धर आउट ऑफ 6 आमे एटी नेले फर्स्ट हैला हमर केतेटा चारटा सेकंड हैला हमर दुईटा थर्ड हैला हमर तीनटा तो आमे ए को देले रैंक 1 बी को सी को देले रैंक 2 एंड डी बी को देले रैंक कोन 3 हैला ए आंसर हमें रैंक करिबा एंड फर्दर स्टेप वी कैन टेक ऑन द बेसिस ऑफ दिस रैंक ओनली राइट द प्लस फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड ना फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड कोन ना फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड कोन सी फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड इट इज अनदर टेक्निक ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन एटा हमें कोन करिबा सी इन द फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड the organization may not have that much of time to do all those things कलेक्ट करो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो समान को इवैल्यूएट करो समान को एनालिसिस करो नो ये सब करबा पई हम पाकरे इते सफिशिएंट टाइम नहीं तो से हमें कोन करबा वी कैन डिस्ट्रीब्यूट द एम्प्लॉय अमंग द डिफरेंट हेड हम तो लोगों को जानि छे ना चलो हमें हम भाई से मान को डिस्ट्रीब्यूट कर दब कोन कर दबा ना हमें कोन करबा ना वी विल गिव सम एम्प्लॉय excellent we can give means what give some employee as a excellent performer some employee as a good performer it may be some is average it may be basically below average and it may be some unsatisfactory or poor so the superior the immediate superior can distribute the employee among these different head से तार ए पांचटा हेड रे से कोन करबो एम्प्लॉय को डिस्ट्रीब्यूट करतो बुझिले कोन
ना आमे इठे इतने टाइम ने हम पाखरे परफॉर्मेंस अप्रेजल करिया पे हम तो जानि इंडिविजुअल लोगों को ना व्हाट इज दैट परफॉर्मेंस व्हाट दे आर डूइंग इन द ऑर्गेनाइजेशन लेट्स वी कैन डू adapt this formula and it is very quickly we can basically what we can do the performance appraisal आमे जदि क्विक फार्मूला नबार अछि ए आमे फार्मूला नै कि आमे कोन करबा इंडिविजुअल एम्प्लॉय को सेपरेट कर दबा सो एडी आमे केमति नबा ना 10% को नियो टोटल 100% हैला से 10% को आमे नबा एक्सीलेंट 20% गुड 40% जनरली रहबा एवरेज 20% हैला हमरो बिलो एवरेज एंड 10% ला अनसैटिस्फाइड basing on this we can evaluate the employees performance and basing on this further step taken by the organization right checklist method kon kariba see checklist method means we can adopt yes no formula right again the many questions that can basically what formed by the immediate superior variety type of question immediate superior design kar debe related to your overall contribution towards the organization related to your behavior and outcome where we can adopt the yes no method kon tadi sab bodi easy method adopt kariya ku chahuncha right and that seta kon hela ami yes no method wise so ami ti kon kale jemti ki mu tumku example deichi is the employee satisfied with the job ami edu kaiba yes or no se satisfied achi ki ta job sahito satisfied mane edu bahut factor asigala no job satisfaction means it relates to variety factor no it include सबु तमर आसीगला जॉब satisfaction factor so to am analysis करिबा if you are yes you are satisfied then we can give yes if you are not satisfied then we can give no then तमे तमरो कामटा को भलो से accurately finish करूचो कि right respect superior को दोचो कि subordinate को सति की help करूचो कि no coordination cooperation peers मान को सहित अछि कि no timely तम organization entry करूचो कि no you are doing your work in timely or not so everything every analysis that taken by the organization and it must be there in a yes no formula re सब जिवो जोटी कि तुमे if the person is satisfied then you can give yes then no then you can give no so basing on this the कोन आमिट अडॉप्ट करिबा ना में checklist method अडॉप्ट करके you can analyze your performance right then we can go for the gote jinso discussion karibi hela modern method re 360 degree performance appraisal dekho mo already tumu kahitili what do you mean by 360 degree performance appraisal see 360 degree performance appraisal kochi kono na here we can analysis mo already upare kahi ki asi who will appraise your performance so here the superior will appraise your performance superior kon appraise karibo na superior will appraise your performance kon appraise karibo na he will appraise whether what is your relation towards your superior right so how much basically what your how you are reporting towards your superior your behavior towards your superior your basically your time related to the organization your contribution towards the work your production your productivity everything that superior will analysis towards you hela ए सब तमरो सुपीरियर एनालिसिस करबे देन तुमको आउ के एनालिसिस करबे 360 डिग्री अप्रेजल रे नो दिस योर सबऑर्डिनेट तुम अंडर रे जे काम करछ कोन सबऑर्डिनेट एनालिसिस करबो हाउ यू आर बिहेविंग टुवर्ड्स योर सबऑर्डिनेट whether you are how you are basically what is your relation towards your subordinate को subordinate सहित तमरो केमती माने basically तुम जतले subordinate सहित काम करछ ना ता सहित how you are behaving your behavior is very rough your very behavior is very polite no तमे ता सहित तमरो no how you are motivating how much you are motivating towards your subordinate to do the work ये सब तमरो subordinate तुमको रिपोर्ट करियो तुमको what evaluate करियो peers your peers will analyze your coordination your cooperation towards your peers your communication your mutual understanding your teamwork no that analysis by your peers जोटा कि हमें कहले colleagues and customer will give you the feedback देखिचो ना सब ऑर्गेनाइजेशन जोडी जोडी हम जिबे सपोज हम जिबे पेंटलून को जिबा हम परचेज करबा हमरो नो जा भी हमरो जिंस परचेज करबार अछि लास्ट से जतले बिलिंग काउंटर रे गोटे फीडबैक दउ सेटा इट इज देयर इन कंप्यूटराइज्ड नो आगुरु तो समस्त दउथिले मैनुअल फीडबैक दउथिले जोटा कि हमें लिखिबा को पड़तला टिक मारिबा को पड़तला बट एना सब कंप्यूटराइज्ड रहि जाई छी सेठी तुमको से 10 टा खंडे क्वेश्चन थिबो ना से माने कहबे मैम इट विल टेक यू ओनली 1 मिनिट प्लीज कहि कि हमें कोन करबे से हमें टिक टुक करि कि कोन ना कोन हमर ओवरऑल टा से माने व्यूटा ने सो इट इज अ कस्टमर व्यू टुवर्ड्स द पर्टिकुलर एरिया एंड पर्टिकुलर थिंग्स ना प्रोडक्ट रिलेटेड व्यू थिबो से जो जे सेल कला ता रिलेटेड व्यू थिबो से मानकर बिहेवियर थिबो से मानकर सब किछि थिबो हैला से सब हैला कोन
ना रिलेटेड टू दी कस्टमर आउरी भी देखिबो जेमति कि हमें परचेज करचे धर जोमाटो रु परचेज कल स्विगी रु परचेज कल कि तमे हमर आसिला कोन ना धर हमर आसिला अमेज़न रु आसिला जिते सब हम ऑनलाइन परचेज करचे ना लास्ट गोटे फीडबैक आस्तबो ना अपन मैडम टिके काइंडली फीडबैक ता दे देबे धर गोटे कॉल सेंटर को फोन करिछ हैला कॉल सेंटर को फोन करछो फोन करिकि ता सहित इंटरेक्शन करछो सब त आज काली रिकॉर्डिंग माने इंटरेक्शन हुए सो से को एचडीएफसी बैंक कर जो भी कॉल सेंटर को फोन कर कि रिलेटेड टू तमर गोटे प्रॉब्लम अछि हम से सॉल्व करिया चाहू सेटु से कोन करिवो ना से लास्ट रे कहबो मैम टिके फीडबैक ता जाउची टिके फिल अप कर दे एटा हला कस्टमर फीडबैक ना केते से तमरो प्रॉब्लम सॉल्व करि पाला से तम से इंटरेक्शन कला ना नहीं ठीक से तार बिहेवियर कोन एमती किछटा क्वेश्चन आस्तेबो तम हमर फीडबैक बेस्ड ऑन द कस्टमर फीडबैक ना एटा कंप्लीटली डिपेंड करछि एम्प्लॉय रो अस्तित्व ऊपर नो so this is what the customer feedback in present environment it is giving more priority no karan one customer if the customer dissatisfaction is there then the customer retention may not be possible right so customer retention it can be possible based on the customer satisfaction only that's the organization giving more priority to the customer right so seta hala tamara kona customer jota ki amara asila au ke rahila most important thing is that is the self appraisal now you will appraise in yourself निज को निज अप्राइज करी कौन मो निज को निज अप्राइज करी सी जेते लोक अप्राइज कले नाइटी किए कले सुपीरियर सबऑर्डिनेट पीयर्स कस्टमर्स ना सबुठ इंपोर्टेंट रहला मो निज को निज अप्राइज कौन निज को निज मो अप्राइज करी नो आई विल अप्राइज इन माई सेल्फ आई विल एनालिसिस माई सेल्फ नो सबुठ वर्ल्ड रहला बेस्ट अप्राइजल सिस्टम कौन मु एनालिसिस करिबि ना व्हाट द थिंग्स आई एम होल्डिंग इन माय सेल्फ जोटा मु चाहूतली सेति के मु होल्ड करिछि कि राइट कौन ना व्हाट इज माय एटीट्यूड व्हाट टाइप ऑफ एटीट्यूड आई एम होल्डिंग इन माय सेल्फ व्हाट टाइप ऑफ पर्सनालिटी आई एम होल्डिंग इन माय सेल्फ हाउ मच नॉलेज आई एम होल्डिंग माय सेल्फ हाउ मच टैलेंट व्हाट इज माय क्वालिफिकेशन व्हाट आई एम डूइंग नो राइट सब जिंस मु निज ऊपर निजे मु एनालिसिस करी राइट व्हाट इज माय लेवल ऑफ कम्युनिकेशन what how I am interacting to others so mo jodi nije feel karini na कि मु ता सहित एमिति व्यवहार कली सो दैट इज इट मस्ट बी रॉन्ग नो सो सेटा मु निज को निजे जो पर्यंत सुधारिबिनी हमको केही सुधारि परिबे nobody will rectify your attitude your whatever may be the things so self appraisal is a most important factor basing on this we can maximize our strength and we can minimize our weakness so this is what if we want to ame first amar goal fix karuche no basing on this we are taking this step no so jaha bhi amar hochi so ame nije ko first appraise kariba dar so this is the performance evaluation of the individual of you can do in yourself mo personality mo dress ta bhal laguni kehi kai koibe mo kon jani mo dress ta mate pinhle ta bhal laguni so I'll change this no so sabu jinsa mo nije ko nije rectify kar so this is what the 360-degree performance evaluation system jota ki organization adopt karchi right so basing on this we can evaluate the individual and based on this only the further step the organization will be take so this is what ame kon kale iti na ame method adopt kale semti bahut sara method achi modern method jemti ki MBO management by objectives behavioral anchor rating scale assessment center emti bahut sara amara performance appraisal मेथड अछि एमबीओ मेथड ऑलरेडी तमर अछि एमसीपी पेपर रे सेठी पूरा गोटे पढिबो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स नो दैट डेवलप्ड बाय पीटर ड्रकर से ताको डेवलप करथिले केमिति ता द्वारा हमें परफॉर्मेंस अप्रेजल लई परिबा सेटा सेठी पढिबो सो दिस आर द अदर मेथड रिलेटेड टू मॉडर्न परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम प्रोसेस सी प्रोसेस कोन करिबा ना इन द प्रोसेस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल इट इज अ वेरी सिंपल प्रोसेस कोन now it is a 6-step process related to performance appraisal and we have to adapt in a step-by-step procedure see the process of performance appraisal it relate to first step setting the performance standard means what the immediate superior will analysis your standard is what your standard you are having a MBA degree you have a this much of experience you have a this much of knowledge skills ability attitude no everything you are holding in yourself right this is your standard basing on your standard only we can assign the task
Now who will assign the task? The superior will assign the task to the subordinate. Now see, the superior will communicate with the subordinate properly. Now, basing on this, the superior can assign the task to the subordinate based on your standard only, right? Suppose you are a graduate student, no? Now, the organization, if you are a graduate student, the organization will not assign the MBA task. MBA means that what kind of task the organization definitely will not assign to that category of person. No, as per your only as per your qualification, as per your experience, as per your talent, no, whatever may be the things what you can handle in the organization. Seti point ame selection karuche na. Seti point ame recruitment kale, selection kale, place kale, basing on your every means what you are holding in yourself, and basing on this we can fix the employee in the organizational hierarchy, right? So tomorrow talent anusare hi ame tuमको काम दबा, right? तुमको जाना नथिबो इलेक्ट्रिक काम, इलेक्ट्रिक जोटा कि आमे कहबा कि गोटे हमर प्लम्बर काम करबा, गोटे इलेक्ट्रिक काम करबा, आमे से कामटा दबा कि तमने कोन हबो ना, एम्प्लॉय भी सफर हबो, ऑर्गेनाइजेशन भी सफर हबो। ड्राइविंग जाना नथिबो आमे तुमको गाड़ी दबा त कोन हबो, गाड़ी रो अवस्था जहा हबो, ड्राइवर रो अवस्था जहा हबो, ओनर रो अवस्था जहा हबो, हैला। सो जहा को जो काम जाना ताको सही काम ही आमे असाइन करू, राइट? सो इट इज ए कहला फर्स्ट वी विल एनालिसिस योर परफॉर्मेंस, analysis your standard. Basing on the standard, the superior can communicate. कहाँ से तो communicate करिबो ना, subordinate say this is your standard. Basing on this, we are assigning the task. आमे तुमको task assign करूचु. Now, task assign करि साला परे, now we can what? Measuring your performance. We will after first we will analyze your standard. Then we can assign the task. Basing on the task, the organization can measure the performance. Organization कौन करिबो, performance measure करिबो ना. How the organization will measure your performance? Based on this method, already we have discussed variety kind of traditional and modern method. Basing on the method, the organization will evaluate your performance, right? Measure your performance. It may be we will adopt the ranking method, it may be rating method, it may be post distribution method, it may be SA method. It depends, no? As per the suitability of the organization, we will adopt the method, right? Once measuring your performance, then we can compare your performance with standard, right? As we measure kari dele na, now what we will do? We can compare. What we will compare? Your performance with standard. Tuma standard kona or tuma performance kona. Tuma standard hela excellent and your performance. Eti tinta jinsa asi paribo. See my dear students. Kona habo na. As per your standard only the organization assign the task. Eta tamme janile. So eti kona hela tinta jinsa asibo. Your performance, it is more than your standard. Your performance is below than your standard. Your performance is equivalent to your standard. तीन प्रकार क्राइटेरिया डी हम आइडेंटिफाई कले. तमरो जहा स्टैंडर्ड थिला तम परफॉर्मेंस ताडू आउरी बेस्ट, राइट? योर परफॉर्मेंस इज बिलो देन योर स्टैंडर्ड. स्टैंडर्ड तमरो बहुत भलो, परफॉर्मेंस इज वेरी पोर. योर परफॉर्मेंस इज इक्विवेलेंट टू योर स्टैंडर्ड. तम स्टैंडर्ड जहा तुमरो परफॉर्मेंस है, राइट? एठु कोन हबो, आमे एठु स्टेप नबा कोन करबा एठी आमे ना discuss the result. Tomorrow performance is more than your standard, your performance is below than your standard, your performance is equivalent to your standard. The superior will discuss that thing with the subordinate, then taking corrective action. Seiti ame tomo pore action naba. Kon naba action na, if your performance is very excellent, then kon kariba ame na, eti ame promotion, increment, no, many things can be happen. You're below the new standard, it may be termination, right? And equivalent to standard, training दियो. Equivalent अछि सते हाई भलो परफॉर्मेंस नै ताको rigorous training दिया जाव, हैला, जोटा कि से बेस्ट परफॉर्मेंस करि पारिबो. So ए टाइप रा मे एठो स्टेप नबा based on this process, based on this method. So this method and process हम एठी fill up कर देले कोन. Now we can fill this what, who, when, how and why factor आइना complete हे गला, right? So basing on this, the organization, every organization, what I told you, basing on this, every organization doing the performance appraisal. Let's go to the potential appraisal. Choto chapter ta quickly sar debi, dhyan re sunibo. Now potential appraisal kon. See, potential appraisal means it is the jodi ame performance ku tomar performance means performance appraisal means evaluate the behavior and outcome.
Potential appraisal means identify the talent, hidden talent or talent of the employees. No, we can analysis your talent, your skill. No, it may be the person may or may not be aware of them. ता माने ये कौन कहूची? Potential appraisal means it is futuristic, it is future based. No, where we can analysis what based on your performance evaluation only. हमें performance रो analysis करिबा कि what are the potential you are holding. ता माने हमें कौन कहि रेडी performance appraisal रे तमे कल गोटे लोक कौन करची, the standard is more than your performance is more than your standard. जो performance करछ standard to आउरी अधिक त माने एटी कोन ना you are holding a variety kind of potentialities. No, जो potential की से लोक जानिथिले कि से जानि नथिले, that is different issue. But एटी हम identify करिबा based on your performance and based on your talent. No, in where in future where the person must be there. हमें future रे लोक को कोठी हमें observe करिबा, right? And what the person will do in which area in presently also हमें कौन कहिले कि based on your performance only we can give you the promotion. So हमें promotion ए लोक को जतले promotion करिबा ना, so where the person must be there. No, organization रे कोठी लोक को हमें fix करिबा केमती ना performance भी अछि और potential भी excellent अछि, talent भी अछि और लोकर means what इच्छा भी अछि, right? ए अनुसार हमें कौन करिबा, we can identify the hidden talent of the individuals where we can fix the individual in the organizational hierarchy, and it is futuristic, right? See, here I will discuss one things, no, in the potential appraisal. One thing we will discussion karibe, what is potential appraisal and what is the basically we can say the methods कहि परिबो आको, right? जोटा कि जो मेथड को अडॉप्ट करथिले कि फिलिप्स इंडिया, right? This is the potential appraisal method. Basing on this, we can analyze the individual potential as well as the performance, right? जोटा को आको डिजाइन करथिले कि ना फिलिप्स इंडिया डिजाइन करथिले this potential appraisal method and the potential appraisal structure, or we can call as a technique. No, एटी कोन हला how we can analyze the individual potential. Now we can analyze the individual potential based on this structure. See, एटी तुम स्ट्रक्चर टा देखुछ कोन, लेफ्ट साइड रे देखो potential अच्छी हाई लो and lower level रे देखिबो परफॉर्मेंस अच्छी हाई लो. जति हमें ए स्ट्रक्चर एनालिसिस करिबा, फर्स्ट हमें जिबा कोन ना दुईटा को फैक्टर लो अछि. दुईटा को फैक्टर लो कोन अछि ना पोटेंशियल इज आल्सो लो, परफॉर्मेंस इज आल्सो लो. तार ना कोन दिया गला ना planned separation. Plan to separation, it means what? See, it is a one category of people, it is there in the organization. गोटे लोक अछि ऑर्गेनाइजेशन रे, ये हला प्लान से लोकर ना हला प्लान सेपरेशन. हम देखतो काहे कि प्लान सेपरेशन, because the person having the performance is also low and potentiality is also low. ना तारा परफॉर्मेंस काम करिवार आग्रह अछि, परफॉर्मेंस रे केमिति हबरे परफॉर्मेंस हबो जते हमर इच्छा हबो, काम करिवार इच्छा शक्ति जते नथिबो ना परफॉर्मेंस हेइ परिबो नाही. हां, हम सब बळे लेजी इंसान हे कि रहबा परफॉर्मेंस केबे भी हेइ परिबो. So कौन एटी कहूची, so performance हला कि based on the तब काम करिवार इच्छा भी नहीं and potentiality भी नहीं, सेमती किछि talent, skill, ability the person is not holding himself and herself. सेमती किछि खास जिंस भी मध्य ता पाखरे नाही. So आकु कोन करिबा ना, it must be plan to separation. आकु तुरंत ऑर्गेनाइजेशन रो बाहर करिबा दरकार. और what question mark से गोटे question mark के रहि गला, right? So if such kind of people it is there in the organization, low potential and low performance, then it is a question mark for the people and for the organization whether the person will continue in the organization or not. It must be separate quickly, or what will happen? The organization, such kind of people will be there in the organization cannot achieve its goal. ता गोल को से लाइफ रे अचीव करि परिबो चाहे कहार ऑर्गेनाइजेशन से पिला तो करिबन थारो तार से चा करू. हां, किंतु ऑर्गेनाइजेशन मध्ये तार गोल को अचीव करि परिबो नाही. So it must be planned to separation, right? तापर असला कि हम जति ऊपर को जिबा problem children कोन कहूची ना, problem children it is ता हमें कहबा कि पर्सन बी हमें धर देटी नेले हैला, सी कोन कला problem children ना, पर्सन बी कोन कला ता ना हैला, सी हैला high potential but low in performance. Potential is very high, no, talent रखिची, skill रखिची, ability रखिची, no, सब किछि भर्ती हेकि अछि, but performance एडी कोन करची
low. Why performance is low? Maybe the person is demotivated, right? काम करिवार इच्छा नहीं, इच्छा काहेंगे नहीं? Maybe the person is demotivated and dissatisfied towards the organization. ठीक है पारे, कुछ भी हो सकता है, right? So personal problem भी थाई पारे, कुछ भी थाई पारे, नले मे भी लोकटा समिति लोक कथा बहुत कहइबो काम करिवनी हैला बड़ बड़ कथा कहइबो किंतु काम कला जमा नाही हैला बहुत किछि हे परिबो राइट सो सेही टाइप रो लोक एटा हैला हम कोन दैट इज द प्रॉब्लम चिल्ड्रन इट मींस व्हाट दिस कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉय आल्सो इट इज थ्रेट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन कारण हमकु दरकार कोन हमकु दरकार तमे केते विद्वान हमकु दरकार नै तुमे कोन कंट्रीब्यूशन करूछो सेटा दरकार तुमे केते जानि छ हमर दरकार नै तुमे कोन ऑर्गेनाइजेशन को देछो सेटा हमर दरकार राइट सो दिस इज व्हाट द प्रॉब्लम चिल्ड्रन तापर हमें कुआर जिबा हमें तळुक आसीबा solid citizen is the another category of person who is high in performance but low in potential से लोक कोन solid citizen maybe सेतिक स्किल नाही से काम करिवार maybe सेतिक टैलेंट नाही से काम करिवार but the person having a very good performance is highly satisfactory and excellent no त माने कोन काम करिवार इच्छा शक्ति अछि the person is हमें कहूनी work is worship no सो हमें जो कहूचे हमें कर्म ही भगवान no जोटा कहूचे सेटा तार शक्ति अछि डेडिकेशन टुवर्ड्स द वर्क डेडिकेशन टुवर्ड्स द टास्क सेही जो इच्छा शक्ति जोटा कि लोक पाखर अछि दैट्स व्हाई से कोन करछि ना परफॉर्मेंस इज हाईली सैटिस्फैक्टरी पोटेंशियल इज मैनट विथ दैट हमें कोन करबा वी कैन एनहांस द पोटेंशियलिटी ऑफ द एम्प्लॉइज दैट आल्सो कैन बी पॉसिबल नो सो सेही लोक कोन हैला ना सॉलिड सिटीजन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड फाइनली असले के लास्ट कैटेगरी हले ना सेटा तो हमें फास्ट नबा बट हम स्टार्टिंग आरो पढ़ी गले एबीसीडी करी गले बट से हले के ना स्टार परफॉर्मर who is a star performer in the organization star performer are the high in potential high in performance no potentiality those things you are holding in yourself that reflect in your work जो जिंस तमे निज ऊपर धरिछ ना तमे कहउछ कि you are this graduate you are having this much of qualification you are having this much of skill you have this much of knowledge no talent you know you are saying many things no so basing on this that is reflect ना सत्तरे तमे एति अच्छा सेटा कोडी रिफ्लेक्ट करछि ना तुम परफॉर्मेंस रे रिफ्लेक्ट करछि काम रे रिफ्लेक्ट करछि राइट सो दैट्स व्हाई you are a star performer in the organization having a very good performance and having very good potential also so this is all about your potential appraisal that designed by Philips India basing on this we can identify what category of employees it is there in the organization whether ए चारिटा कैटेगरी को कैटेगरी लोक केते परसेंट हम ऑर्गेनाइजेशन अछन सेटा हम एनालिसिस करबा हैला whether it is हमर 1 2 3 4 भितरु को कैटेगरी लोक केते परसेंट अछन से अनुसार ऑर्गेनाइजेशन कोन करबो फर्दर स्टेप नबो this is all about your performance and potential appraisal students बुझी गलो दीपक टिके 2 वे कर देले रे बाबा बुझी गला very good students दीपक रे अच्छा पिला माने हां आसी गल हां पिला माने कार किछि डाउट अछि कि एटा कार पिला माने students have you any doubt related to performance and potential appraisal आज्ञा मैडम आज्ञा 2 वे कर दिछो कि दीपक 5 मिनिट पचारिबी कारण मोर सपटे क्लास अछि no doubt not till now very good ma'am 360 feedback can you please explain that again that 360 appraisal 360 degree performance appraisal no many things involved in this madam kar dei ha see 360 degree performance appraisal many person involved in this 360 degree performance appraisal 360 degree why it is now all the persons are there in a 90 degree equally they will appraise to you right and in the middle position you are there you will appraise in yourself in your upper position your superior are there who will appraise your performance in your downturn tomo tole no tomo under re kiye rahibo na subordinate who will appraise to you know what is your performance and in your similar level the colleagues are working jo mane ki tomor colleagues mane kamo karanti no they will appraise to you as an individual and the customer also give the feedback to you so based on this no you will I'll appraise in myself no
That is the one factor. And apart from this, the other 4 factors, they will appraise my performance. Basing on this, I can identify, the organization will identify whether my performance is excellent or poor. This is the 360-degree appraisal, and they will give the similar, same question we will distribute to all the among all the person, all the individuals. Right? बुझिगले? Ma'am, who will be हम जो superior side? Who will be ट्रेडिशनल superior और side? मॉडर्न जोड़ा लिखा हैदिला ट्रेडिशनल और मॉडर्न जोड़ा लिखा हैदिला टिके स्क्रीन टा खाली देखेबे मैम गुटे देखा- ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर भितरे distribution method. मैम कौन कहले Force मैम distribution method. कहले जो आपण परफॉर्मेंस रेटिंग जो कलीग मान को पाखरु किबा आपन को सबऑर्डिनेट मान को पाखरु निया होउची आपण गुटे ऑर्गेनाइजेशन रे काम करला बेले आपण को सबऑर्डिनेट किबा आपण को कलीग माने समस्त को खुशी करिया तो संभव नुहे ना टुवर्ड्स आपण ऑर्गेनाइजेशन गोल जते आपण काम करछन समस्त समान स्पीड रे चलछन किबा समान एटीट्यूड रे चलछन ठीक नुहे तो परफॉर्मेंस ता से बेसिस जदी हुए तो भूल होत नहीं किछि बोलबनी कारण देखंतु आपणकर कलीग्स आसिले तो कलीग्स और सबऑर्डिनेट आसिले तो सुपीरियर भी एठी अछि कस्टमर भी एठी अछि हैला जदी आपण एक्चुअली रे काम करचंती आपणकर एठी कस्टमर फीडबैक भी देखा जिवो जोटा कि आमे कहूचे कस्टमर तो आपणकर डिस्क्रिमिनेशन आपणको सहित करिवो ना से आपणको चिन्हिछि कि हु यू आर सी कंप्लीटली देखिवो बेस्ड ऑन योर आपणकर कोन व्हाट इज योर बिहेवियर टुवर्ड्स द कस्टमर को आपण कोन सर्विस दउचंती से अनुसार से देखिवो राइट सो सेठु आपणकर जो देखिवो ना से आमे कस्टमर रे भी फीडबैक एठी देखिले सुपीरियर रे भी फीडबैक देखिले जदी आपणको कलीग्स भलो फीडबैक देइ नांती सेटा को आमे एनालिसिस करि परिबा कलीग्स आपणकर 50 जन कलीग्स अछंती कोन 50 जन कलीग्स आपण खराब फीडबैक देबे 10 जन आपणकर सबऑर्डिनेट अछंती 10 जन सबऑर्डिनेट आपण खराब फीडबैक देबे समझि तो होबनी ना समस्त को तो फीडबैक समस्त पूरा कॉन्फिडेंशियल रखा जिवो धरन तो सेटा कहउतली जे समस्त को तो सैटिस्फाई करि परिबेनी ना करिबा नो नो ना आपणकर सब ऑर्गेनाइजेशन रे सबुठ बड़ एनिमी के कहले आपणकर के कहले ऑर्गेनाइजेशन रे सबुठ बड़ एनिमी आपणकर के कंपटीटर कंपटीटर कुआड हैला म आपणकर कलीग सबऑर्डिनेट कलीग हैला आपणकर सबुठ बड़ एनिमी काहे कि से केबे भी चाहेबेनी आपण ऊपर को जान से केबे भी चाहेबेनी आपणकर बेस्ट से चाहेबो कि मोर बेस्ट नो आई विल बी द बेस्ट एग्जैक्टली एटा सबोटी एवरी ऑर्गेनाइजेशन सब ऑर्गेनाइजेशन रे से सेही आपणकर पॉइंट ग्रोथ ऊपर देखिबन सेही पॉइंट ऊपर सुपीरियर तो अछंती ना से तार फीडबैक भी देखिबो कस्टमर फीडबैक देखा जिवो राइट ए फीडबैक को हमें देखि एनालिसिस कर दबा है सब सही पॉइंट हम 360 डिग्री कोले समस्त को रेडी एनालिसिस कोले बुझि गले ना Ma'am, I want to know forced distribution method. फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड के गोटे कहितले कोन स्क्रीन डा हां दउछि आगे जोटर जो हाउ टू अप्राइज रे जोटा ट्रेडिशनल और मॉडर्न जो मेथड दीटा जाको लिखा हैतला से स्क्रीन रे ओके मैम फास्ट स्क्रीन टा भी हला देखा गला कि मैम शेयर कर देले भलो होता एबडा सेटा तो लास्ट टाइम को कहिछि क्लास करला पर ताकू सेटा ये करा जिवो आज्ञा मैम हैला अच्छा फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन केडे पचारतला सी फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन हैला कि आमे कोन करबा हम पाखे सफिशिएंट टाइम नै हैला आमे इते क्वेश्चन करबा कलेक्ट करबा ताकू डिस्ट्रीब्यूट करबा कलेक्ट करबा ताकू एनालिसिस करबा ताकू ये करबा ताकू स्पीसीज रे पकेबा ताकू पूरा तार बाहर करबा इते टाइम नै हम कोन करबा ना वी कैन डिस्ट्रीब्यूट द एम्प्लॉय अमंग द डिफरेंट फैक्टर हेलो स्टूडेंट सुबह जाउची ना यस मैम वी आर गेटिंग सुना जाउची मैम हां आमे कोन करबा त Forced distribution method. सेही फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड ही मु कहूची मु कोनटा कहूची कि मु कहली कि आमे कोन करबा ई जो फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड ओडिया नहीं आता अच्छा सुनो हां कौन सुनो अभी हम क्या करेंगे कि इतना क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना उसको कलेक्ट करेंगे उसका एनालिसिस करेंगे इतना हमारे पास टाइम नहीं है अभी तो हम क्या करेंगे कि हम नहीं एज ए सुपीरियर क्या करेंगे ना सुपीरियर क्या करेंगे कि दिस 5 फैक्टर में नो यू कैन सी दिस स्लाइड हियर बेस्ड ऑन दिस 5 फैक्टर वी कैन डिस्ट्रीब्यूट द एम्प्लॉय राइट बिकॉज सुपीरियर को तो पता है ना कौन किसका क्या परफॉर्मेंस है राइट सो सुपीरियर क्या करेंगे ऐसे 5 फैक्टर में लोगों को डिवाइड कर देंगे no someone is the excellent performer, someone is the good performer, someone is the average, someone is the below. Basing on this we can distribute the performer employees
So what will happen? We can do the performance appraisal very quickly. इसका disadvantages भी है. Now what is the disadvantages? So basing on this formula, it may be the excellent performer, it may be go to the average, right? And average performer it may be, but it is not possible also. Accuracy it may be there in the 99% because the superior node to the individual subordinates, the performance of the individual subordinates. So it is the quick formula that we can adapt here. Okay. अच्छा Ma'am, ଆଉ could କାର you କିଛି ସ୍ଲାଇଡ୍ ଟା ଆଉ share ଟିକେ the ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ slide, ଟିକେ ma'am? କଟି ଯାଇଥିଲି ସେ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଟା ଟିକେ ଆଉଥରେ ମ୍ୟାଡମ୍ ଦେଖିବେ ଟିକେ କୋଉଟା Ma'am, କୋଉଟା କୋଉଟା ଏ मैम ये स्लाइड शेयर कर दीजिए ना ग्रुप में. वो लास्ट अच्छा, में वो करेंगे, आप- मैम ने बोले मैम जो लास्ट बेल में शेप सारा शेयर करेंगे. ଆଉ କାର କିଛି मैम जो बेल Ma'am, शेप first slide, please. परफॉर्मेंस गुटे आसी नुवा मैडम आई हैव अ डाउट ये कॉर्पोरेट रे मैडम First slide, आपनकर please. କୁହନ୍ତୁ you have to keep 10 to 20% people in bad performance area. You have to keep. If everyone is performing well, but you have to keep 20% most worst performers. You have to keep 20%. सर मैडम ए जो नुवा कल्चर आसी Ma'am, बर्तमान next, माने please. आपको Ma'am, next, जबरदस्ती please. से बेल शेप गुटे आसी बेल शेप आप जानते हैं मैडम बेल शेप परफॉर्मेंस गुटे जबरदस्ती आपको बॉटम रे किछि लोकन को रखिया को ही पड़िबो जोटा कि आपनकर फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन सेटा को ये कोच कंपेयर कोच हां हां मैम जे आपण कंपेयर करिवे ना जो बेल शेप कहउछन ना सेटा कंपेयर आज्ञा। करिवे आपनकर फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन जोटा कि आपण को आमे किछिरा जोटा कोन कहले बिलो एवरेज रे आमे फोर रे किछि को रखिबा ही रखिबा हैला आ समस्त तो एक्सीलेंट परफॉर्मर नो ना से अनुसार रखि कि आमे कोन करबा एई जो फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड वी कैन कंपेयर टू दैट पर्टिकुलर मेथड सेति पय आमे एटा कोइडी कवर कर देल किंतु मैम आपण कहउतले धरंतु गुटे ऑर्गेनाइजेशन रे मिनिमम कैपेसिटी सहित समस्त काम करचंती तो ताकू वर्स्ट परफॉर्मेंस 20% जेबे आपनकर नहीं नहीं सुनो वर्स्ट रे तो वर्स्ट माने कोन आमे वर्स्ट मान तो आमे टोटली बाहर कर द पारता नहीं नहीं बाहर करिया कथा पडिनी ए जो 20% वर्स्ट परफॉर्मर भितरे आपण रखिबे ताकू वर्स्ट परफॉर्मर माने हैला जोटा कि आमे एमिति नुह कि टोटली ऑर्गेनाइजेशन नुहंती समस्त एक्सीलेंट परफॉर्मर केबे भी हेई परिबन नहीं नहीं एट पार जदी अछंती मैम जदी एट पार अछंती एट पार अछंती आ जदी भी सेमती किछि रहिले सेमान को सही कैटेगरी रे ही रखिबा हम तो बाहर करि पानी कारण बाहर तो पूरा वर्स्ट पळेबे हैला सही कैटेगरी से माने रहिले दोस द ऑर्गेनाइजेशन विल गिव दैट मच ऑफ फैसिलिटी सेमान को दिया जिवो बट प्रमोशन मे नॉट बी देयर सैलरी इंक्रीमेंट मे नॉट बी देयर राइट सेमानकर प्रमोशन सैलरी इंक्रीमेंट ए सब हेई परिबो नै बिकॉज़ दे आर दैट मच ऑफ माने जोटा कि आपे कहबा कि आई कैचिंग परफॉर्मेंस अप्रेजल इट नॉट देयर ओके राइट सेटा वो चाहिए डाटी वो है ना जो हमारा चैप्टर था ना डाटी प्रमोशन हां ड्राई प्रमोशन ऐसा वैसा होगा बस सही में हैला चलो थैंक